अब कर लेंगे जी। तो मैं बात कर रहा था वेस्टेड इंटरेस्ट की, जिसमें निहित होता है कि मैं फ्री में कुछ नहीं करता, है ना। मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाके क्लास लेता हूँ, उसमें मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। मेरी कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस होती है, मेरी सेल्फिशनेस होती है, जो मैं ट्राई करता हूं कि ओपनली उनको नहीं पता चले, ओपनली उनको ये लगे कि ये बहुत जेन्युइन आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। ये किस प्रकार से फ्री में बच्चों को, इसको तो बड़ा चाव है बच्चों को पढ़ाने का। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये होता है कि ठीक है, उस बहाने दो नमस्ते ही बढ़ जाती हैं, चाहे उस बहाने दो नमस्ते ही बढ़ जाएं, पर कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट तो होता है, या बुक्स का प्रमोशन होता है, या चैनल का प्रमोशन होता है, या किसी भी प्रकार का होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। So what I do that when I go to any school, and at the time that most of the principals and headmaster, they are well known to me, especially in this surrounding, they are well known to me. And sometimes they make request as well that sir, please come and tell some skill to our student that how they can learn English. So it means that I go. What I was talking, what I wanted to say, why I'm making this background is this: that when I enter the class, at the time of the student, just like a disciplined student, they greet me. They greet me. Susila, meaning they greet me. मतलब वो मेरा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। हाँ, सम्मान, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। ग्रीटिंग होती है ना, ग्रीटिंग, है ना, वेलकम सर, समथिंग लाइक दैट। दे ग्रीट मी, एंड because first of all, my look is, I wear rings as well. You don't know that in the class I never wear rings. But when I go to any school at the time, I wear rings in my earlobes. I have rings. I have golden rings. Yeah, sure. No, because they suit my klappen. They suit it. They suit it. So, and even I have a cap. I have a safari cap. I wear that one too. I have some goggles. I have very expensive goggles. I have some very expensive goggles. So I wear that one too. And if in that posture, if I go to any government school, where most of the students, they are from the middle class, of course, they are from the middle class, and sometimes lower class as well. So when they look at me, so naturally they have a sense of surprise that what a cartoon he is, what a cartoon he is, what a clone he is, CLOWN, what a clone he is, why he has come. There are so many kidas of curiosity. There are so many kidas of curiosity in their mind. They start jumping. They see that who is this guy, why he has come, what going he is going to teach, what he must be selling something. Sometimes they think that either I must be selling something. I'll show them any show. I'll show them any show, just like drama, etc. I'll do just like magician type. They think like this. But in the very beginning, I declare it that I'm not going to sell anything. I'm not going to dramatize anything. But I know very well that if I want to give first impression, then I must not speak. I always welcome everyone. Everybody must be happy. They keep looking like this. They keep looking like this, meaning they keep looking like this, meaning कैसे Sweta. देखते रहते हैं। देखते रहते हैं. They keep looking like this. And then my first sentence is this, that everybody must be happy. No, this is my take. This is my take, you can say. And my dear friend, my name is this. And don't worry, I'm not going to teach anything. Don't worry, I'm not going to teach anything. I'll free from knowledge. I'll free you from knowledge. So when I started speaking in English, at the time, all of them, they are very surprised one. But just at the time, I just say them, because that all of you know very good English. All of you know very good English. Main thing is the presentation.
how a teacher present himself. If a teacher daily teaches anybody in English, it's very easy to understand that one. If I conduct this class daily in like this, so I'm dead sure impression or it will be more than what we learn in Hindi. It will be more than that. Then I start telling them a story. Then I start telling them a story, and because that is the offline class, so in that I can touch them, I can feel them, I can make them stand, I can make them sit, I can make them laugh, and everything. Everything is there. And then I keep speaking around 10 to 15 minutes. My story takes around 10 to 15 minutes to be completed. So and they start understanding it. Honestly, they start understanding that one, whatever I speak, they understand it. And when the story is over, and when they give me big applause, or because in most of my story there is a twist at the end. In most of my story there is a twist at the end, and when they understand the twist, I always try to explain each and everything very minutely, very minutely, and then I make them realize that you can understand English, you can understand the language, you can understand the language. स्वीता को समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आ रहा है भाई? सर आप ये कह रहे हैं कि जब मैं उनको आखिरी में मतलब मैं हर चीज छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कहानी की, और जब लास्ट में उसका मतलब कि ट्विस्ट बताता हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं या उनको समझ आ जाता है, तब तक वो स्टोरी को समझने लग जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपने बोला कि वो फिर अप्लॉज करते हैं, मतलब तालियां बजाते हैं। और लास्ट वाली लाइन क्या बोली थी आपने? Everything okay. There is no need to recall that one. It means that you understand everything. Am I right? You understand everything. You don't have difficulty in the listening at this time. You don't have any sort of, not only you, but there are so many other students in the class, they don't have any sort of difficulty. So that's why, as far as speaking, now the main question, one day I keep, keep crushing myself. I kept crushing. I had a sense of guilt. Honestly, I had a sense of guilt. Because of you, Sweta, because of you. I had a sense of guilt. क्या क्या बोला ममता मैं? सर एक दिन थोड़ा मतलब दुख हुआ। क्यों? Because of whom? हम लोगों को लेकर सर। Not particularly, not all logs. Only मैम। no, not all logs. सविता मैम को only लेकर। Sweta. Because Sweta, she had gone to school. She had applied for any job. She wanted to offer her service as a geography teacher, I think so, if I'm not wrong. Yeah, as a geography teacher, she wanted to teach. And this time, I think that it was only last month only. It was last month only or last to last month? Maybe last month. Okay, if we take it last month. And it has passed, I think that more than around 3 months. It has passed around 3 months that continuously you have been joining the class. If I'm not wrong, am I right? It has passed around 3 months that regularly you have been taking the class. And I knew it when Savita, she told the principal that, sir, my concepts are very clear. My concepts of geography, they are very clear. And I have been a very good teacher as well. I have been a very good teacher. किससे पूछूं? अवधेश बता दे क्या मीनिंग? अवधेश क्या मीनिंग? I have been a very good teacher. अवधेश भाई? No? पिलानिया? सर मैं बहुत अच्छी टीचर रही हूँ। Yeah. I have been a very good teacher, and I love my student. What I teach, they understand everything. And if you want to compare my quality with other teacher, sir, one demo I'll be providing, one demo other would be providing. But sir, that I don't have very much fluency in English. And they rejected her just because of one thing, that we don't understand, we don't want to check your knowledge. How you teach, what you teach, no, there is no need of this. There is no need of. Just tell us about your language. Is your language very diplomatic or not?
We just want to know that is your language very diplomatic or not? It means that English or not. English is a diplomatic language. English is a diplomatic language. There is no need to tell, there is no need to teach sanskara to anyone. We don't call students to teach here sanskaras. We just call them, we just teach them just to, transfer the data. Anyway, she was rejected. At last, she was rejected on the basis that she didn't have fluency. She had everything, but she didn't have fluency. She had each and everything. She was fulfilling all the requirement what a teacher should have. She was fulfilling all the requirement a teacher should have, but she had no fluency in the language. That's why. Then I had a sense of guilt. उस समय मेरे को ये लगा कि यार फिर ये दे क्यों नहीं देता तू फ्लुएंसी। फिर उस दिन क्यों पहले दिन ये प्रॉमिस किया था कि फ्लुएंसी दे देंगे, सिखा देंगे इंग्लिश। उस दिन तो कहा था on the first day when you telephoned me, not only you, when everybody telephoned me, on the day I promised this one that this is my guarantee. I didn't take guarantee, but I said that I'll make you comfortable. I didn't take the guarantee, but I said that I'll try my best to make you comfortable in the language. But comfortable means the result. Comfortable means that there must be the difference between 0 and 1. If she was rejected, she was 0. If she joined the job, it means she was everything. But then my subconscious mind, my second dog, because there are two dogs in the mind, my second dog was saying that you can make anyone comfortable only in the listening. You can't speak on their behalf. You can't speak on their behalf. Just let me on the battery. You can't speak on their behalf. जोगिंदर क्या मीनिंग हुआ? You can't speak on their behalf. सीख सिर्फ बोलना आप अपने लेवल पे ही सीख सकते हो। Something like that. Something like that. कि मैं आपके लिए बोल नहीं सकता। सर मैं आपके लिए बोल नहीं सकता. You yourself will have to speak. You yourself will have to speak. You yourself will have to practice. You yourself will have to do the practice. Or not. Whether you speak the right and wrong, one day you can speak one line, second day you can speak 2 lines, third day 3 lines, something like that. Or we can improve like this one. We ourselves, we will have to fall and we will have to rise again. We will have to fall and rise again, something like that. Yes, one thing about, I'm quite sure. About one thing I'm quite sure that I can make any student very comfortable in the listening within a short span of time. So what I wanted to say that what you have to do, please do one thing for me. That if you want to be comfortable in the structure, if you want to be comfortable, then please send me something. And I have said this so many times. And I have said this so many times, and but sometimes, not sometimes, all the times you can say, all the times that I don't get the expected result. My expectations are not fulfilled. My expectations are not fulfilled. Otherwise, that's the channel. That's the channel. Second thing that if you want to say something, this is the best platform. This is a good platform at least. I don't say this is the best one, but at least it's a good platform. That today I have something to speak and I would like to speak. Today I have something to speak and I would like to speak. Otherwise, one more thing you can do that you can make a recording. Nobody see you at this time. Everybody is having phone nowadays. And you can have a stand or you can put your phone anywhere. And after it, you can make some recordings, sir. This was my story. I recorded this story, sir. I spoke about this one, sir. Please listen this one. I know. Please tell that whether I was right and wrong. You can speak very simple story, very common story. Just like, let me tell you how it is. एक बात याद आ गई पहले, एक बात याद आ गई, उसकी बात बता देंगे, है ना? ज्यादा इंग्लिश है ना, फिर तो आपको पता होगा ना कि लड़ाई शुरू होने से पहले, अक्सर पुरानी फिल्मों में आप देखना, लड़ाई शुरू होने से पहले एक सॉन्ग जरूर आता था। लड़ाई हमेशा सॉन्ग के बाद ही आती थी, या जब भी सॉन्ग डाला जाता था ना, उसके बाद कोई ना कोई एक ट्विस्ट आती थी, है ना, कुछ अलग आता था। पक्की बात है, ये हर देखा होगा आपने, हर किसी में देखा होगा कि थोड़ा सा उनको एक बार थोड़ा सा इजी सा कर लेना, ताकि वो एक जो खास बात आए ना,
उसको डाइजेस्ट करने में कैपेबल हो जाए। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती थी। जैसे इसको प्लॉट बोलते हैं, PLOT, प्लॉट बोलते हैं इसको। जो मूवी का प्लॉट लिखा जाता है ना, वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि भाई ये बात जो है ना, ये बात थोड़ी सी हैवी आने जा रही है, थोड़ी भारी आएगी, तो इससे पहले थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा सा लाइट कैसे करें, कंफर्टेबल कैसे करें, है ना, ऐसा होता था। आपने सभी ने नोट किया होगा ये। तो एक शायरी याद आ गई, पहले उसके बाद कुछ बात बताऊंगा, है ना। कि हमने तो अर्ज किया है, हमने तो मोहब्बत का मैथमेटिक्स पढ़ा है जनाब, हमने तो मोहब्बत का मैथमेटिक्स पढ़ा है जनाब, जहां एक घटाने से, जहां दो में से एक घटने पर कुछ नहीं बचता, जहां दो में से एक घटने पर कुछ नहीं बचता। किसी ने मुझसे पूछा कि इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो, किसी ने मुझसे पूछा कि इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो। मैंने कहा कुछ तोड़ना पड़ता है लफ्जों को जोड़ने के लिए, कुछ तोड़ना पड़ता है लफ्जों को जोड़ने के लिए। प्रणाम, स्टोरी शुरू करते हैं। देख सुशीला इतनी बेईमान, इतनी बेईमान है, ताली भी नहीं बजाई, दो सुना दिए, है ना, यूं बैठी टुग्गा सी बैठी रहती है, टुग्गो सी बैठी रहती है। खैर खैर, जी जी जी। कनपाल कैसे हैं भाई आप? जी नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते कनपाल, नमस्ते। नाउ जी, so what it is that actually why I'm telling you all these things, that I was supposed to resume the story. I was supposed to resume the story. जोगिंदर क्या मीनिंग हुआ भाई? I was supposed to resume the story. I was supposed to resume the story. No answer. Mamta? I was supposed to resume the story. सर मैं स्टोरी के बारे में कुछ बताने की वो कर रहा था, रिज्यूम का सर, मतलब जो बायोडाटा टाइप में होता है ना, एक रिज्यूम, मतलब कुछ उसकी लाइनें। अफार कराई, सो कोस दूर, नो ममता, नो नो नो। मैं I was स्टोरी को again let me दोबारा स्टार्ट करने वाला था। हाँ जी, शाबाश अरविंद जी, अरविंद भाई। मैं स्टोरी को दोबारा स्टार्ट करने वाला था। हाँ, मैं स्टोरी को नहीं, स्टोरी को, है ना, स्टोरी को। सर मैंने इसलिए रुका था क्योंकि स्टोरी को वापस से शुरू कर सकूं। जी, ऐसे था कि वैसे तो मैं कहानी वही जो वल्ली वाली कहानी शुरू करने वाला था। ममता गौर कीजिएगा इस बात पे। वैसे तो क्लास के शुरुआत में मैं वल्ली वाली स्टोरी शुरू करने वाला था। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, आई वॉज सपोज टू स्टार्ट द स्टोरी, आई वॉज सपोज टू रिज्यूम। वो रिज्यूमे होता है ममता, जिसकी आप बायोडाटा की बात कर रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन रिज्यूमे होती है। हाँ मानता हूं स्पेलिंग सेम होती है, मानता हूं RESUME होती है, पर वो रिज्यूम नहीं होता, वो रिज्यूमे होता है। बमता बोल हाँ। यस सर। जी, तो उसमें बायोडाटा का कहीं नहीं था। When I started the story, so at the time I was supposed, when I started the class, at the time I was supposed to start a story, the same story. I was supposed to resume the same worldly story, but I searched everywhere. I searched it in the Google, but honestly I didn't find that. I asked you to wait for some time. I asked you to wait for some time, and even you waited. And even you waited. मीता मीनिंग बता दे दोनों लाइनों का, मीता। I asked you to wait for some time, and even you waited. मीता। और आप लोगों ने वेट भी किया। जी जी जी, मैंने आपसे कहा कि भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और आपने किया भाई। But in vain, INVERIN, in vain. पर सब व्यर्थ था। हाँ, सब व्यर्थ था, because I couldn't get it. I couldn't get it. I found different platform where it was not in that form, that I couldn't see, I couldn't search that. Then I told you Baba's story. Then I gave you then I quoted Baba. Then I cited Baba, that once there was a Baba, he was going somewhere on his bicycle.
and somebody was coming from the opposite direction, and he told that, Baba, this side there is a that a windstorm. There is a windstorm, and now why are you going? So Baba took a turn, and he said, okay, for me, just like that, I have no problem. I would go to any side. All side are mine. All side are mine. I can go in any side. Then simultaneously, this idea was going in my mind that I must make the student practice for something. Let's take a practice from the book, and we will be practicing on this. I'll make the student speak for that one. But instantly, the same idea, it was also there in my mind that the main important thing, that is the listening, is very important. Listening, so I must speak in English in the class with a great pause, with a complete pause, not just like, not in a speed, but with a pause. When you learn how to make pauses, in the language, it means that you are having a command or control over the language. There must be control on the tongue. That is very important, whether you are having the control on the tongue or not. So then I told this one in between. I told you Sari as well. And after that, what I was saying that I was supposed to tell you a story. Just like we can take Thirsty Crow story. Very simple. Everybody know this? Very simple. Everybody know this? And you have to write this. You have to make a video of it. You can make a video of it. This will be a homework like that. It will be a homework for you. Agree, Krampal? Krampal, are you agreeing? जी sir, yes sir. I just say, sir, that first of all, I'm going to tell you the story. I'll tell the story. I'll elaborate the story. Not just like what, I don't know what was written in that one. I don't know what was written in the book. It has passed around more than 20 years. I have never read this story. But the theme of the story is there in my mind. Thirsty Crow story, everybody have heard. I'm sure everybody must have read this. I'm dead sure about this. First, I'm going to explain, I'm going to elaborate the story in the class. Then you can do it before mirror, you can do it before phone, or you can record it in your phone. But that must be in English. That must be in English. Right and wrong, it hardly matter. It will be a joyful journey for you. It will be a joyful journey for you. I'll complete it in around 10 minutes, or it may take more than half an hour to complete the story. It may take more than 20 minutes to complete the story, and you can brief it in 2 minutes, 3 minutes, or whatever you like. I was telling you that when I pay a visit to government school, and when I start telling the story, when I ask the student that, do you understand English? All of them, they first deny, no, sir. When I ask the student, when I start my seminar, I ask the student, sir, that if may I speak in English, or is there any need to speak in Hindi, or should I be continue in English? मेरी एक पेट लाइन होती है वहां पे, मेरी पेट लाइन होती है कि भाई, may I, is there any need to speak in Hindi, or should I be continue in English? Is there any need to speak in Hindi, or should I be continue in English? क्या मतलब हुआ कृमपाल भाई? सर एक बार दोबारा बोलना प्लीज. Is there, when I start my seminar, when I start my class, offline class, anywhere, at the time, after greeting, after the exchange of greeting, my first line is this: my dear student, is there any need to speak in Hindi, or should I be continue in English? मतलब जब सेमिनार जो शुरू किया तो दुआ सलाम होने के बाद और उसके बाद भाई कोई भी हिंदी में बात नहीं करेगा, सब इंग्लिश में बात करेंगे. Again, I am going to repeat. Sorry, Krampal. Sorry. No, Gajendra, I am coming. No. Again, I am going to repeat. This time, you have to better try. Dharmendra, I can see Dharmendra also on the screen. Hello, Dharmendra must be happy. Hi, good morning, sir. Morning, bhai. Listen this time. You know, I sometimes pay a visit to schools. Is it clear, Krampal? The first line, is it clear? जी कई बार मैं स्कूलों में दौरा करता हूँ, विजिट करता हूँ जी. Yeah, like this.
And I offer my volunteer service. I conduct seminar. And when I start the seminar, when I start my lecture, just at the time, because as I told about my posture, and about my, that dress, I told you about my getup. I told you what kind of the getup I'm having. I have earrings, I have that safari cap and goggles, everything. And I also speak in English. I don't speak, that in the first 15 minutes or first, that more than 20 minutes, I don't speak even a single word of Hindi there. I don't, and because the student, that is their new experience, that is their first experience. That's why there is not even a bit disturbance in the class. There is not even a bit disturbance. All of them, they are they are spellbound. They are spellbound that what this guy is speaking, what this guy is speaking. Because in the very beginning, I say that is there any need to speak in Hindi or should I be continue in English? Sisodia. मुझे तो इंग्लिश में ही बोलना चाहिए या हिंदी के बोलने की आवश्यकता है? जरूरत सर आप कोई और भाई? सर जब मैं स्कूलों में सेमिनार के लिए जाता हूँ तो दुआ सलाम के बाद पहले 15 मिनट मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलता हूँ और वहाँ बच्चे एकदम उनके मतलब आंखें फटी रह जाती हैं। मतलब ये आदमी की कैसे इंग्लिश बोल रहा है। और मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, हिंदी बोलने की आवश्यकता है या मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूँ? आहा, या है ना, समझे सुनीता जी? सारे के सारे इवन इंग्लिश टीचर भी मना कर देता है। सच बात है, सबसे पहले तो वही मना करता है कि ना 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 सर, ये वो दूसरे बालक हैं, है ना, ये बच्चे दूसरे हैं, उनसे दूसरे हैं, वो समझ में नहीं आता, है ना। आप समझ ही गए होंगे दूसरे यानी कि ये किस तबके से हैं, इंग्लिश नहीं समझेंगे। Then I say them, okay, this is the first day. I'll make you realize that you understand everything. I'll make you realize that you understand. Then I start my story that, my dear student, okay, let me tell you the story of a thirsty crow. And how I tell that once there was a crow. Once there was a crow. Understand, Rahman? Rahman, did you understand the first line? Mr. Rahman from Zind. He's not there in the class, I think so. Vansika? Hello, Vansika. She has also gone to school. एक कौवा प्यासा था। मोटा भाई मोटा भाई बताती है कि एक कौवा प्यासा था जी। मैंने प्यासा का तो नाम ही नहीं लिया। थर्स्टी क्रो नहीं, मैंने थर्स्टी तो बोला ही नहीं, मैंने तो इतना ही बोला था, वंस देयर वाज अ क्रो। वह स्टोरी पर क्यों जा रहे हैं आप? पता नहीं क्या वो भूखा, मेरे वाला हो सकता है भूखा हो, हंग्री हो जी। खैर नीलम, माइक ऑफ कर दीजिए। So how it is that how I run that one, that once there was a crow. You understand crow? I asked the student who are present in that class. I asked those student that I asked, do you understand crow? Crow fly high in the sky. Crow fly, black color. You understand? Crow is a bird. Crow is a bird. Oh, black color. Have you seen any crow of white color? Have you seen any crow of white color? They say like this. No. Crow is always black in color. So once there was a crow. Is the first line clear to everyone? All the students say, yeah, sir, first line is clear. Parrot is green. And a pigeon is blue. Parrot is green, crow is black, and crow is a bird. Understand the first line? Yes, sir, we understood the first line. Crow is black. Crow flying. Yeah, yes, sir, fly. High. Yes, sir, high. In the sky. Yes, sir, in the sky. Yes, my crow is also like that. In my story, there is a crow, and crow very thirsty. Very thirsty. Just make them feel the story. Crow very thirsty. Because you know that it had passed a long time. It had passed a very long time that he had not even seen water.
He had not even seen water. It had passed a very long time. He had not even seen water. डॉक्टर श्रवण खोजा, क्या बोला मैं जी? डॉक्टर श्रवण खोजा, डॉक्टर साहब शायद एक्टिवली प्रेजेंट नहीं है। जोगिंदर है भाई? बहुत प्यासा था और पानी की तलाश कर रहा था, उसे पानी नहीं दिखा कहीं भी। He was not seen the water. पानी नहीं दिखा। एक बार ये लाइन फिर बोलना। He was not seen the water. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ सिसोदिया? He was not seen. He was not seen. जी, पर उसे देखा नहीं गया। उसे नहीं दिखा था। उसे नहीं देखा गया। किसमें हो गई ममता? क्या क्या जोगिंदर ने क्या गलती की इसमें? सर एक बार रिपीट करवाना। He was not seen the water. He was not seen the water. पैसिव में है सर ये। पैसिव सेंटेंस है। जी, शाबाश भाई, है ना? विक्रम और अरविंद ठीक बता रहे हैं कि सर इन्होंने तो पैसिव बना दिया ना सर। ही वॉज सीन का मतलब वो नहीं दिखा। उसने नहीं देखा तो ही डिड नॉट सी। उसने नहीं देखा, ही डिडंट सी। वो नहीं दिखा, ही वॉज नॉट सीन। ही वॉज नॉट सीन का मतलब कौवा दिखाई नहीं दिया। यदि मैं ये कहूं कि एक दिन जो है ना हमारे यहाँ को, मैंने किया नहीं, ये सब मैं करता नहीं हूँ, है ना? आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुंडेर पे कौवा आके बैठते हैं, सच में, है ना? वो गाना है ना, माई नी माई मुनेर पे तेरे बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। तो जब वो आके बोलते हैं, आजकल कम है ना कौवे, थोड़ी कम है, पर वो सुबह 2 आते हैं। एक कौवी होती होगी शायद साथ में, 2 कौवे तो क्या आते होंगे, है ना? होने वाले हैं सर, अब रोज आएंगे। हाँ जी, कनागत शुरू होने वाले हैं। अच्छा अच्छा ना जोगिंदर, मेरी अपनी मेरी तो क्या कहूं भाई, अपनी खुशनसीबी ये है, वो कभी से आते हैं, है ना? एक बार उनको जाइए पता, क्यों मैं रोटी डालता हूँ ना, जो रोटी खाने के लिए आ जाते हैं वो रोटी के उनके साइज के हिसाब से वो बनाते हैं। मोर भी आते हैं। तो मैं और कुछ बात कर रहा था यार, मैं भूल गया क्या बात कर रहा था जी। एक दिन क्या है कि एक दिन मैंने उसको पत्थर मारा उनको। उस दिन के बाद वो दिखाई नहीं दिए। एक दिन मैंने उनके पत्थर मारा, फिर वो कभी दिखाई नहीं दिए। दे वर नेवर सीन। दे वर नेवर सीन। आपने जोगिंद्र ये लाइन बोली थी, है ना? एक हम अक्सर गलती कर बैठते हैं, वो ये सोचते हैं कि इस वोज का मतलब था होता है। जब तक हमारी माइंड से ये नहीं निकलेगा ना कि वोज का मतलब था होता है, तो ये गलतियां अक्सर होती रहेंगी। तो ये आएगा सर वहां पर, देयर वाज नॉट सीन द वाटर। He had not seen, sir. He had not seen water even for. He had not even seen water. मैंने even पे नहीं, ये भी आ सकता है ना सर, वहां पर पानी नहीं दिखा। देयर वाज नॉट सीन द वाटर, ये पैसिव में ये। हाँ, water was not seen. water पहले लगाओ ना फिर। अच्छा, water was not seen. हाँ, water was not seen anywhere. Water was not seen anywhere. पानी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। Water was not seen anywhere. पानी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे कर सकते हैं आप, है ना? Anyway, so I just what I was telling that there was a crow. The first line, it's very clear. And then he had not even seen water. It had passed a very long time, and he was dying. He was dying of thirst. He was dying of thirst. He was dying of thirst. Meaning Sujata Thakur. He was dying of thirst. Sujata Thakur, answer me fast. Don't look like this. Why are you there to see? You know that she's leering. See leering. Don't leer at me. Just tell me that he was dying of thirst. He was dying of thirst. What does it mean, Sujata Thakur? He was dying of thirst. सर dying का कमपाल बता दे भाई। वह बिल्कुल मरने को हो रहा था सर, जान निकलने को हो रही थी उसकी। क्यों, क्या बात हुई? कौवी बगैर? हाँ, प्यासे के पानी के बगैर सर। अच्छा, पानी बगैर, ठीक है भाई, पानी बगैर, है ना जी, है ना? थ्रेस्ट का वो यूज कर रहा था ना। थ्रेस्ट का मतलब प्यास से, है ना? प्यास के कारण उसकी थ्रेस्ट से ही थ्रस्टी बनता है। थ्रेस्ट से ही, जिस प्रकार से हंगर से हंगरी बनता है, जिस प्रकार से हंगर से हंगरी बनता है, उसी प्रकार से थ्रेस्ट से ही थर्स्टी बनता है। सो ही वाज डाइंग ऑफ थ्रेस्ट। ही वाज डाइंग ऑफ थ्रेस्ट। He did his best. He did his best. He, you know that he peeped into the houses. He peeped into different houses. He peeped into different houses. मतलब
वो अलग अलग घरों में जागता रहता था सर। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक समझ में आते हैं। He peeped in different houses, but at the that he searched everywhere. He made सर everything. जी, सर सर आप डिफरेंट डिफरेंट बोल रहे हैं सर। डिफरेंट डिफरेंट तो एक बार ना डिफरेंट होगा सर। शाबाश भाई। कबीर बता रहे हैं कि सर इंग्लिश में एक शब्द 2 बार नहीं आता है। कभी आपने ही बताया होगा शायद, या तो कभी आपने जी बताया सर। था या मैंने कहीं पढ़ा है। हिंदी में जिस प्रकार से आदि आदि होता है ना, इंग्लिश में जिस प्रकार से जैसे जैसे होता है, इंग्लिश में उस प्रकार से कभी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है सर। डिफरेंट का खुद का मीनिंग ही अलग अलग होता है। यदि आप डिफरेंट डिफरेंट कहेंगे तो ये हो जाएगा अलग 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 अलग। अब आप देख लो सर, 4 बार बोलोगे या 2 बार, भाई लॉजिकली कबीर खान आप ठीक हैं, प्रैक्टिकली मैं ठीक हूं। लॉजिकली आप ठीक हैं, मैं लिखूंगा नहीं डिफरेंट डिफरेंट, ये पक्की बात है। मैं कभी लिखूंगा नहीं डिफरेंट डिफरेंट, ये पक्की बात है। मैं भी बोलूंगा और दुनिया भी बोलेगी, ये भी पक्की बात है। बोलने में आएगा, बोलने में आएगा, लिखने में जो है ना, लिखने में नहीं आएगा, है ना, लिखने में नहीं आता है। बोलने में जो है दैट आप बोल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल सकते हैं सर? नहीं सर, हाँ जी, उसको बोल सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। नहीं सर। हाँ, लिख नहीं सकते, लिखना एक अलग, बोलना जी एक जी अलग चीज है, जिसमें हमें वी हैव नॉट टू बाउंड आवरसेल्फ इन रूल एंड रेगुलेशन। जी We सर, have समझ में आ not to गया। bound ourselves in rule and regulation. Speaking is a different thing. Anyway, I यस। was talking that he went to different places, but he didn't get any water from anywhere. At last, that he went to a garden, and there in the garden he saw a pot. In the garden he saw a pot, but the level of the water in the pot, it was too low. The level of the water in the pot, it was too low. Then an idea came to his mind. That he came back. He came back to the village. He came back to the village. Directly, he went to a shop. Directly, he went to a grocery shop. He went to a grocery shop. And from that shop, he bought a straw. From that shop, he bought a straw. Because he was not a typical. मॉडर्न क्रो ले लिया सर आपने। Yeah. मॉडर्न क्रो ले लिया सर। Yeah. Because this is of the Google time, not of the Mughal time. This crow belonged to Google time. जैसे एक समय था जब बहन जी होते थे, आजकल जैन जी है। जैन जी स्पेलिंग समझ में आई आपको? जैन जी की स्पेलिंग समझ में आई? नहीं आई होगी शायद। JAIN जे। अरे नहीं, ये वाला जैन जी नहीं है। जैन जी क्या है? सुने कभी किसने ये टर्म सुनी है, जैन जी? नहीं सुनी। जैन की स्पेलिंग GEN है, जिसकी फुल फॉर्म जनरेशन होती है ना। जैसे नेक्स्ट जनरेशन या G2 सुना हो, G5 सुना हो, G7 है ना, जनरेशन 7 ही तो है उसका भी नहीं है ना। G2, G3, G4, G7 जैसे इस प्रकार से तो जनरेशन ही है। और जनरेशन की शॉर्ट फॉर्म GEN होती है। और जो इस जनरेशन की जो गर्ल हैं, जो लड़कियां हैं, उनको जैन जी बोला जाता है। वो आजकल बहन जी बहुत कम बचे हैं, आजकल जैन जी बचे हैं, है ना। सुशीला को समझ में आ गई, आजकल जैन जी बचे हैं, है ना। इसमें क्या अंतर हो गया सर? बहका के बना दिया और क्या? नहीं बहका गया नहीं, आप ये था कि वैसे ही ध्यान में आ गया। तो मैं जो बात कर रहा था कि that it was modern crow, and from there he brought a straw. From there he brought a straw. He they dipped the straw in the pot. He drank water, and after that he flew away. Just like you can make any twist, you can make any turn in the story, but the main important thing that it was the listening one, and सुनना बड़ा जरूरी। आप कोशिश करना भाई, ठीक से ही रही क्लास, सो आप कह सकते हैं, है ना। द टाइम इज अबाउट टू ओवर टाइम होने वाला है। बहुत बुरी नहीं थी, शुरुआत ठीक चली थी, लास्ट में आके कहीं ना कहीं कोई डिग्रेडेशन सा हो गया, है ना। तो पर ठीक थी, बाद में ईच एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट ओके। हम कैसे भी मैनेज तो कर ही लेते हैं, मेंटेन तो कर ही लेंगे उस चीज को। आपकी साइड से थोड़ा सा कुछ वो दिखाइए, फिर और मजा आएगा भाई, और टेस्ट आएगा। आप लिख के, आप वीडियो के थ्रू, और जैसे कैसे भी हो सके, सो दैट फ्रॉम योर साइड इफ यू डू सम एक्टिविटी,
that they will be very helpful for me, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है भाई, आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी चीजें कल वही डिस्कस सर। कर। जी भाई। सर जी जिस दिन पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे उस दिन तो इंग्लिश हो ही गया सर। हाँ, उस दिन तो ही जाएगा कबीर, उस दिन तो इंग्लिश हो ही जाएगा। जरूर कोशिश कीजिएगा, कुछ लिख के भेजें या कुछ रिकॉर्ड करके भेजें। मिलते हैं आपसे कल इस इसमें, तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग अवर गुड डे। बाय बाय। बाय। ओके सर।